Starting off with the crackdown on illegal madrasas in Uttar Pradesh. Now, that crackdown has indicated gross misconduct in management of several madrasas allegedly. Madrasas in Prayagraj and Moradabad have failed to give satisfactory details of their sources of funding and affiliations according to the authorities. Now, if you remember, there was a survey that was done. This was very controversial in the nature that it sought the funding of these unregistered madrasas, and now there is going to be action presumably on the madrasas that have failed to give satisfactory details of their sources of funding and affiliations. Going across to my colleague Pranshu Mishra, who brings us more details. Pranshu, now the findings of that survey are out. There are unsatisfactory answers. What are the next steps that are expected to be taken? See, at the moment the survey is not entirely over, so it will take few more days before the entire survey report comes in, and we are talking about a voluminous task. In fact, there are at least 16,500 madrasas which are already recognized by the state board, and many more, in fact thousands more beyond the ambit of the madrasa board. So we are talking about at least 40 to 45,000 madrasas. That is what a primary estimate is. Now the survey has still not been over, but the initial findings, the survey details in certain districts like Moradabad, Prayagraj, Amroha, from where a bulk of detail has already come in, that clearly shows that the rationale behind going in for madrasa survey, that was an appropriate rationale, that was a justified rationale, because in the primary reports that have come in, there have been several madrasas who have failed to actually give a satisfactory reply to their sources of funding, to the nature of their affiliation, to which particular private bodies, Islamic bodies they are associated to. So that clearly gives government an ample reason to say that we were justified in going ahead with the madrasa survey. Now what will be the exact picture after this entire report comes in? We'll have to wait for a few more days, because the initial deadline of completing the survey was 10th of October, but it could not be met because it was a huge logistic challenge to go ahead, find out all the madrasas. There was also some delay because of recent holidays, because of Dussehra, and then we all saw that how weather had played a havoc across all the districts in UP over the past few days, because of which the work has been hampered. But we have been speaking to senior officials, especially in the madrasa board, and they do say that primary findings clearly prove it beyond doubt that this exercise was needed to be done, and we are justified in doing this drive, because now the government clearly will have all those needed statistics to go ahead cracking a whip on illegal I'll say unregistered madrasas, not illegal madrasas, but the unregistered madrasas who have been operating, flouting all norms. And two contentious issues were there. One, to disclose the source of funding, and the second, your affiliation. And many madrasas, it seems, are failing on those two counts. Just stay with us, because we're also joined by Dr. Javed, who is a madrasa board chairman. So preliminary findings of the survey, which is still currently underway, say that there is gross misconduct when it comes to the management of the madrasas. How do you view this finding and the statement coming in? कोई भी मदरसा ये वैध और अवैध को जांच का विषय नहीं था। ये सिंपल सा सर्वे चल रहा है, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे है, जिसमें हमारे बोर्ड से मान्यता नहीं है, क्योंकि मान्यता 7 वर्षों से लगातार बंद है। तो बहुत सारे मदरसे दरमियान प्रदेश की आबादी बढ़ी, बच्चे बढ़े, तो मदरसे भी नए बने हैं, कुछ मदरसे पहले से भी हैं जो हमारे यहाँ बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन उनका सर्वे चल रहा था कि उनकी संख्या क्या है, उनके बिल्डिंग कैसी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है, बच्चे कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, इसका सर्वे चल रहा है। ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई जांच नहीं है, कोई वैध कोई अवैध की बात है ही नहीं है, कोई असली और फर्जी की बात नहीं है। केवल एक सिंपल सर्वे डेटा कलेक्शन का हो रहा है। जिस तरीके से सर्वे स्कूलों का होता है, कॉलेजों का होता है, उसी तरीके से सर्वे यूनिवर्सिटीज का होता है। वैसे ही पहली बार मदरसों का सर्वे हो रहा है। सर्वे के बाद को तोड़ मरोड़ करके इस तरह से वैध अवैध के रूप में परिभाषित करना, ये बहुत ही गलत बात है। हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमें काम करने में असुविधा हो रही है इस तरह की बातों से। सर, बट वो जो सर्वे करने वाले अथॉरिटीज हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो जवाब मिल रहे हैं उनके प्रश्नों के, जो फंडिंग के बारे में है, जो एफिलिएशन के बारे में है, वो बहुत अनसैटिस्फैक्ट्री हैं। तो ये खुलासा क्यों नहीं हुआ है, और ये सारे जो मदरसे हैं उन्होंने आमतौर पर जवाब क्यों नहीं दिया है सीधा सीधा
कि उनका फंडिंग क्या है, अफिलिएशन क्या है, क्योंकि जैसे कि आप बोल रहे हो ये पहले एक सर्वे ही है। जावेद जी आवाज सुनाई पड़ रही है? मैं प्रांशु बोल रहा हूँ। आपसे कई बार बात हुई है सर्वे के बारे में। ये बताइए कि अभी तक की जो फाइंडिंग्स आई हैं, सर्वे पूरा नहीं है लेकिन अभी तक की जो फाइंडिंग्स आई हैं, क्या उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे मदरसों की है जो अपने सोर्स ऑफ फंडिंग और एफिलिएशन के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए हैं? इस तरह की जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। सारी जानकारी जो है अभी हवा में है, क्योंकि सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे की डेट 5 तक थी, जो बढ़ा करके अभी 20 तक कर दी गई है। और हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो 15 नवंबर तक आनी है। उसके पहले इस तरह की बातें करके एक माहौल को फिर दूषित करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि हमारा वो टारगेट है ही नहीं है। हम तो सर्वे के जरिए से डेटा कलेक्शन का काम कर रहे हैं। हमें डेटा चाहिए। हम कोई वैध अवैध की जानकारी इकट्ठा करने के लिए सर्वे नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ये सर्वे इसलिए है कि कितने मदरसों की मान्यता है कि नहीं। मेरा सवाल ये है कि कम से कम अभी तक की जो डेटा आए हैं, जो इनपुट्स आए हैं मसलन मुरादाबाद से या प्रयागराज से, वो कम से कम ये बात तो साबित करते हैं कि सरकार की जो मंशा थी वो सही दिशा में थी और इस सर्वे की जरूरत थी। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे ना कि सर्वे की जरूरत ही क्या है। तो अब जो इनिशियल डेटा मिला है उससे लगता है कि सर्वे जरूरी था। अगर जरूरत ना होती तो हम लोग सर्वे क्यों कराते? सर्वे की जरूरत बिल्कुल है और सरकार की मंशा साफ है। जो बच्चे हमारे मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड नहीं है, वो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं मदरसे हैं, उनके बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये जानने का हक हमें है। और वो कौन सी किस तरह की बिल्डिंग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है, इस तरह की चीजों पे लगातार हमारा नजरिया है कि उन बच्चे भी हमारे प्रदेश के हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, कल के हमारे भविष्य हैं, तो उनके बारे में जानने का हक है और वो सर्वे के जरिए से हम पता कर सकते हैं। लेकिन मदरसों के जो फर्जी, असली, अवैध इस तरह की बातें प्रोफार्मा में कहीं नहीं है। प्रोफार्मा में इस तरह की जिक्र है ही नहीं है। ये बातें कहाँ से आ रही है? ये हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जा रही है कि हम खोजने कुछ निकले हैं और लोगों की तरफ से कुछ इनपुट मिल रहे हैं। हम सर्वे के जरिए से बच्चों के मुस्तकबिल पे बेहतर काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और इस तरह से बीच में अभी सर्वे काम चल रहा है। अभी सर्वे बहुत जगहों पे नहीं हो पाए थे त्योहारों की वजह से, जो है उनका डेट बढ़ाई गई है कि आप और समय लेकर के इसको ठीक ढंग से करके हमें रिजल्ट दीजिए। इसका जो है अभी 15 नवंबर के पहले कुछ भी कहलाएगी। ठीक, शुक्रिया जावेद जी। Back to you in the studio. Pranjal, you were just speaking to Javed, the chairman of the Madrasa board. He says that to come up with any conclusions before that survey is completed would be wrong, and that to kind of try to put some color to these findings is too premature at this stage. Well, I think what Dr. Javed is emphasizing is that, everyone should see this exercise as an attempt to find out that which madrasas are affiliated and which are not affiliated. So it is not about the question of being illegal or not legal or illegal, because madrasas do have a right that they can identify them, associate to themselves to any higher body of Islamic education, and also they have the right to associate themselves to the state operated madrasa board. And as we said, therefore we said that we are not saying that it is a question of being legal or illegal. It is a question that whether the madrasa who are affiliated or non-affiliated, are they running as per the norms? Even if they are not affiliated, do they have a clear record of who is the funder of these madrasas and which bodies are they affiliated to? What is the status of infrastructure there? What is the status of syllabus there? So I think this is the exercise by the state government, by the Yogi government, to ensure Pranjal, that stay with us. in the